बताएं व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन रियल लव। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिससे आपके सामने भी पूरा खुलासा हो जाएगा कि आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा और आप ऑनलाइन में जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। आपके लिए रियल लाइफ बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, वो है ये शो। Gauahar, this is the first time you're hosting a show. What made you say yes? I get to host it with the amazing Ranvijay Singh, so I am very You're happy. missing him, yeah? Where is he? Yeah, What I is know. this? There he is. अभी क्या बताएं? He's enjoying his time, but कह रहा कल से पूरा हंगामा शुरू होने वाला है, आज मैं थोड़ा उसकी आदत है, वो लॉन्च से एक दिन पहले गायब हो जाता है। In today's day and age, do you all think there is true love that exists? of course, 100%। of course. प्यार हर कोई ढूंढता है और ये आज की दुनिया में ये खोज कैसी है, वो ये शो है। Are there going to be some Raghu Rajiv bits that we have seen from roadies in this as well? मैं और राजीव इस शो में एंटर नहीं कर रहे। मेरे और राजीव के साथ लोग या तो डरते हैं या नफरत करते हैं। अच्छा, इन यही दो ऑप्शंस है। हाँ, एंड वी आर हैप्पी लाइक दैट। हाय, मैं हूँ राजीव लक्ष्मण। मैं हूँ रघु राम। और मैं हूँ गौहर खान। आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। देखिए बॉस, लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बट लव के मामले में कॉम्प्लिकेशंस होना तो नहीं यार, नहीं जमेगा। वेल, व्हाट इज रियल लव, ये जानने के लिए देयर इज अ न्यू शो दैट्स कमिंग राइट at your screen on OTT, and today on Bollywood Hungama with me Urmin, I have the creators. Hi guys. Hi Urmin. Hello. सबसे पहले तो Raghu, how are you doing? I'm doing great, yeah. I'm really enjoying talking to you. I'm so glad. शुरुआत ही हो गई है पहले से। Hi Rajiv, so good to see you too. Pleasure. And of course Gauahar Khan, glowing as ever. Thank you, so sweet. It's so good to see the three of you all together. Let me just first start with the two of you all. बताएं what is this concept of in real love? In real love ये नहीं है कि real love क्या है, but कहाँ मिलेगा, ये है क्वेश्चन। रियल लव कहाँ मिलेगा? आज की डेट में हर चीज़ के ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि कंफ्यूजन होता है। अगर आप जोमेटो पे भी जाओगे ना, आपकी भूख दुगनी हो जाएगी जब तक आप डिसाइड कर लोगे कि मैं कहाँ पर से क्या मंगाऊं। आप किसी OTT प्लेटफॉर्म में चले जाओ, खत्म हो जाएगा, आपके आधा घंटा बीत चुका है, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन सी फिल्म देखूँ आज। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? वही एक प्यार और रियल लव के बारे में भी के एरिया में भी ऐसा आ चुका है, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन है। तो हमने कोशिश की है कि ये ऑप्शन का कंफ्यूजन जो है थोड़ा कम करें और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिससे आपके सामने भी पूरा खुलासा हो जाएगा कि आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा और आप ऑनलाइन में जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। आपके लिए रियल लाइफ बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, वो है ये शो। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये कोई एजुकेशनल शो नहीं है। हाँ, ठीक है, ये एक लव स्टोरी है। इनफैक्ट बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत सारे लव स्टोरीज हैं, जैसे रघु ने बताया, इतने सारे ऑप्शंस वगैरह होते हैं। उसी ऑप्शन और उसी कंफ्यूजन में एक डिलीशियसनेस है, एक मज़ा है। उसमें कहानियाँ बहुत पैशनेट, इंटेंस और यंग निकलते हैं और होपफुल निकलते हैं। हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं ऑन ऑल दैट। एंड ये शो बनाते हुए गौहर और रणविजय के साथ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग, कह लो या फैसिनेटिंग साइड ऑफ यंग लव और डेटिंग देखा, the way it happens, and I'm really happy with the way it has come out. Gauahar, this is the first time you're hosting a show. What made you say yes? She's hosted many This times. is the first time I'm hosting a show on Netflix. On Netflix, yeah. right. And first time, I would say, of course, a dating reality space, yes. Lekin it's the first time that Netflix India has a reality show that they are, creatively coming up with, which is so fantastic. And I get to host it with the amazing Ranvijay Singh. So I am very You're happy. missing him, yeah? Where is he? Yeah, What I is know. this? There he is. अभी क्या बताएं? He's enjoying his time, but कह रहा कल से पूरा हंगामा शुरू होने वाला है, आज मैं थोड़ा उसकी आदत है, वो लॉन्च से एक दिन पहले गायब हो जाता है। no, but it's been wonderful, and I'm just grateful for the opportunity, and I hope that inshallah IRL सबको इतना पसंद आए कि हम बस season after season बनाते रहें, and we can just
find, I would not say, a solution or this or that, but we would love to know, okay, where does this experiment take us, But आपने कहा कि that this is a love story that we are going to experience. In today's day and age, do you all think there is true love that exists? Of course. 100%. Of course. 100%. ये क्वेश्चन भी आपने जिस वजह से जैसे पूछा है, उसका एक रीज़न ये है कि ऑप्शंस ज़्यादा हैं. For the first time in the history of humankind, we have a problem of plenty when it comes to potential partners. ऐसा है, इसलिए आपको लगता है कि शायद रियल लव नहीं होगा. We disagree, and I think प्यार हर कोई ढूंढता है. और ये आज की दुनिया में ये खोज कैसी है, वो ये शो है. That is exciting. वैसे you guys are known for reality shows and we've watched you all on roadies. मुझे in fact when I met you all also I was like, am I going to give an audition today? I should give an audition. That's the first thing that comes. I'm sure you all have heard this a lot of times. Yeah. But are there going to be some Raghu Rajiv bits that we have seen from roadies in this as well? Ranvijay and Gauahar are representing us. There's another character along with Ranvijay and Gauahar called Meet Cute. Meet Cute हमने एक डेटिंग ऐप बनाया इसी शो के लिए. और सारे जितने बाहर आपके फ़ोन में जितने भी डेटिंग ऐप है ना, सबकी छुट्टी हो जाएगी जब आप मीट क्यूट से मिलेंगे. मैं और राजीव इस शो में एंटर नहीं कर रहे. अच्छा. और वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने जो कहा ना कि हमें देख के ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा और ऐसा, वो एक ब्रांडिंग और इमेज बहुत स्ट्रांग है. वी वांटेड पीपल दैट हमारी जो कास्ट है वो उन्हें एक दोस्त की तरह देखे, एक एल्डर ब्रदर सिस्टर हो या दोस्त बेस्ट फ्रेंड, वैसा देखे. मेरे और राजीव के साथ ऐसा हो नहीं सकता. मेरे और राजीव के साथ लोग या तो डरते हैं या नफरत करते हैं. अच्छा, इन यही दो ऑप्शंस है. हाँ, एंड वी आर हैप्पी लाइक दैट. राजीव, आर यू ओके विद दिस ऑप्शन? या आई मीन सी, हमारा काम करना हमारा काम है, जो है हमारा काम है, हमें करना है. ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से हम कैमरा के सामने आए और लोगों के ओपिनियंस है और हमें बहुत प्यार भी मिला और काफ़ी नफरत भी मिली. एंड दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग इफेक्टिव and being successful at what you do. And we are successful, I think, because we are very honest in what we want to express. And if we had to honestly express this concept of ours, it was important for us to not be a part of it on camera. In front, yeah. But to find the people who would best embody, I'm telling you, इस शो के बाद आप अपना एक अलग से ईमेल बना दो, Gauahar Khan IRL @gmail.com, ऐसा कुछ बना दो, because everybody, especially the girls, are going to want to talk to you about their love lives. Yeah. Well, it's also that's a great idea. I think it's also very relatable because we see you so much on Instagram, and the two of y'all as a couple just have these hashtag goals. couple goals, So it's kind of is that, are y'all okay with it? This social media PDA, how does it feel? Well, we don't do it for effect. हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि this is going to portray us as couple goals, but actually it's a lot of, it's like slice of life from the way we actually are. Yeah. And that's what our personal social media pages represent. क्योंकि I have never actually done anything out there जिसमें मैं believe नहीं करती हूँ. जैसे कि simple things like I'd never post something about betting or gaming because वो मेरा मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वो सोशल मीडिया पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, राइट? सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी फॉलो. बट yes, there is a connect between a show like IRL and Zaid and my story, because यहाँ पर जब हम कहते हैं कि कौन सा बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मेरी ज़िंदगी में दोनों ही हुए हैं. ऑफलाइन के काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, एंड एक ऑनलाइन का हुआ एंड वो मेरी ज़िंदगी भर के साथ ही बन गए. So that's why maybe you see the chemistry, or that's why, like he said, true love does exist. It's just a matter of how, when, and where you find it. So yeah, clearly now I understood that how you all wanted her to be on board, because this is what she is getting on the plate, which is so important. Being aspirational and relatable, okay, in themselves are difficult. मगर दोनों साथ में होना next to impossible. हमारा concept is aspirational and relatable. We want somebody who's aspirational and relatable. Ranvijay and Gauahar are very aspirational, and yet you will see on this show they're very relatable.
I have a very, very heavy question that I'm going to ask. Okay. Individually. Okay. Alright. What is love for you all? Rajiv. So मैं जो बोलता हूँ, a lot of the people we love in our life are our relatives or friends. The only relationship that you have, that you've chosen, is your spouse. Yeah. Okay. So I'm a married man, so I'll speak as married people. But you don't need to be married to find love. I think love is not two half people coming and becoming a whole. Love is about two complete people coming and becoming greater than their mere sum. Lovely. Yes, क्या बात है? रघु? यार मेरे लिए इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, बट होना चाहिए, है ना? लव, I'll tell you what love is not. It's not hard work. I'll tell you what love is not. Love is not non-stop happiness. Love is not the absence of struggle, but the presence of somebody that you feel happy struggling for and struggling with. Yeah. Love is a force which is capable of transforming you as a person. It has transformed me as a person. The show that you're going to watch, अगर मैं आपको बताऊं नहीं कि रघु राम ने डायरेक्ट किया है, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये शो मैंने बनाया होगा, बिकॉज जिस तरीके से आप मेरे को जानती थी उसमें ये फिट होता नहीं है. बट आई हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड आई हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू माई एक्सपीरियंसेस ऑफ लव विथ वन पर्सन. Wow. So Sometimes. if it can change one heart, Yeah. it can change the world. Yeah. It's a force, but it's not hard work. Isn't that simple? Yeah. Beautiful. I think, like you said, it's simple, but some of the most simplest things are so complicated and difficult to explain. Not complicated, but difficult to explain. Gauahar, Yeah. tell us what, according to you, if you had to define love. Like he said, I can tell you what's not. In my life, when I was experiencing or seeking love, or seeking, okay, I'm ready, I'm ready to like commit, and I'm okay, and I've always been ready. I've been that person who's like, kya hai pyar? Batao, let's go for it, man. So I have always been ready. I was ready to get married at 19. I was like that ready. That okay, fine. It's about commitment. It's about, being there and doing that. But what over time I realized is that there are a lot of expectations of people that are put on you that, okay, what love is. And that complicates it too much, right? Some people are commitment phobic, some people are not, and all of that. People are encouraging. Okay, great. Everything is great. But everything that I wanted in a person or in a relationship have come alive, and I have realized it that, I can find it in one person, in Zaid. So for me, essentially, there are three things that is love. One is respect. The second thing is friendship. And the third is trust. So these three things, and by trust I don't really mean to say, because लोगों को लगता है कि शक करना और ये करना और वो करना, that is trust. No. When you can trust your being, your existence, your decisions, you know that the person who you can trust it with, to have a child, to see a future, to know that he's got my back or she's got my back, no matter what. वैसे तो love क्या है यार, वो एक नज़र आप एक दूसरे, like I feel like वो एक प्यारी सी नज़र भी देखो, वो भी प्यार है. वो हक से गुस्सा करो, वो भी प्यार है. So प्यार is a lot, but essentially if he can be your best friend, you can trust and respect and love each other's existence, that's love. Amazing. Oh my God. क्या जवाब मिले हैं मुझे. वाह वाह वाह. हमने इस शो में बहुत तरीकों से एक्सपीरियंस किया और ये काफी जांचा है इसको. एक्सपेरिमेंट किया हमने इसमें. I love it. I totally love it. But coming back to IRL, with the promos that I'm seeing, and I'm definitely going to see this show. I understand that आप ट्रेडिशनल डेटिंग और आजकल की डेटिंग दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं. Yeah. Have you guys had an experience of the traditional way? क्या आप में से किसी को मम्मी पापा के किसी रिलेटिव ने मिलाया? ट्रेडिशनल शादी नहीं, ट्रेडिशनल डेटिंग. हाँ, but
वैसे ट्रेडिशनल डेटिंग में पेरेंट्स मुलाकात तो अरे ट्रेडिशनल आई अज्यूम दैट मॉम की किसी मासी के किसी नहीं अच्छा देखिए आप अगर शादी के रिश्ते को आप देखेंगे ना तो वहाँ ट्रेडिशन ऐसा आ जाता है बट डेटिंग पता क्या होता है बॉय एंड गर्ल वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर दैट्स इट फैमिलीज में आते नहीं अक्सर मोस्ट बॉयज एंड गर्ल्स विल टेल यू इन कॉलेज इट्स हिडन फ्रॉम देयर पेरेंट्स राइट तो वो है ट्रेडिशनल वे ऑफ डेटिंग अब टेक्नोलॉजी वाली डेटिंग जो है वो बहुत अलग है बिकॉज यहाँ पर आप मिलने से भी पहले आप देख चुके एक दूसरे को बातचीत हो चुकी है हो सकता है कुछ इंटीमेट फोटोज भी आप एक्सचेंज कर चुके हैं तब जाके एक दूसरे को एक्चुअली मिलते हो कि मैं जिससे बात कर रही थी वो क्या यही था या कोई और था यू नो व्हाट आई एम सेइंग सो द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डेटिंग इज एक जगह पर आप किसी से मिले आप एक दूसरे को पसंद करने लगे जानना चाहते हैं एक दूसरे को आप टाइम स्पेंड कर रहे हो शायद फिल्म देख रहे हो फिर शायद आप कॉफ़ी पी रहे हो फिर शायद आप फिल्म देखने जा रहे हो फिर शायद आप किसी पार्क में जा रहे हो वगैरह वगैरह और टेक्नोलॉजी वाली डेटिंग है कि आप ये सब नहीं कर रहे हो आप एक दूसरे को पहले जान रहे हो फिर डिसाइड कर रहे हो कि मैं मिलूंगा या मिलूंगी कि नहीं सो ये बेहतर है या वो बेहतर है दैट इज व्हाट द शो इज हाउ डिड यू गाइस कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट what inspired you all it's real life see our shows are rooted in the reality of the youth today आप कोई भी रोमांस रियलिटी शो एक इतना बड़ा जॉनर है 15-20 साल से सीजन्स चल रहे हैं शोज के इंटरनेशनली भी इंडिया में भी मगर 10 साल में 8-10 साल में जो बदलाव आया है द वे वी मीट एंड द ऑनलाइन डेटिंग एप्स का वो रिफ्लेक्ट नहीं है सो आई कैन वॉच एज एन एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल in a beach not being able to have sex but I mean it's not my life and you don't need to relate you don't need to relate but our endeavor has always been to make something that is very relatable. Do you think that this show will also be an not an eye opener but something for the parents to probably understand that maybe this is the kind of dating that is possible? I'll just say when we make a show any of us our point is not to change or revolutionize the society. Okay, first and foremost it is an interesting story we want to say an entertaining story. Now in that story in our kind of shows it is written after we start shooting. Okay, right, so we don't have a script or anything but we know how to make that story come alive. Okay, so first and foremost whoever's watching this should understand it's not an attempt to make people understand anything. You will empathize with it, you will connect with it, you will get entertained. It's a beautiful story and actually very interesting story of 4 singles. Okay, and their schizophrenic dating life, you know, with real life dates on one hand and online dates on the other, totally different experiences yet very strong connections. What happens when everything clashes, just comes together? Then what is better, which one survives, which is the stronger connection? It's entertaining, but and that is it. अब आप point of any good reality show, like the point of any good story, is to hopefully tell you something about yourself, make you think about something. Yeah. You know, वो भी होगा. But that's not the point. Entertainment. I hope you enjoy watching the show. That's what I. People should binge it, enjoy binging it. Yeah. You know. And by the end, you won't probably realize how it has affected you or changed you or enhanced you. Speaking about entertainment, one of the things that have also entertained individually all of us is sometimes a date that goes wrong. Yeah. Have you all had personal experiences? Those are the more common things. Do you guys want to share a personal experience maybe of a date that went absolutely wrong? No, not me. I've not dated, so that's different. But through the show, through casting for the show, I have heard so many horror stories. So many horror stories that even if I was thinking कि यार dating करूँ नहीं करना because so many red flags, so many cringe dates and everything that's mostly the norm. And while shooting it, the date is happening. Obviously, we create an environment where they feel they're on an intimate date, although there's so many cameras and crews. Yeah. And I'm sitting there with and I'm out of sight, but I can look at them in a monitor, in many monitors, and I can listen to them. So I have eavesdropped. It's very important. On many conversations as well. You understand? For them, it's just the two of them.
they can say whatever, just you know, They कोई want, flirt yeah. मार रहा है, chance मार रहा है, वो वहाँ से वो line types ले रही, whatever. And no, but you will see some dates going wrong in Yeah. the show, and you'll see some amazing dates on the show. Yeah. There's so much that I want to watch. Oh my god. voyeuristic pleasure. Yeah. हाय, मैं हूँ राजीव लक्ष्मण. मैं हूँ रघु राम. और मैं हूँ गौहर खान. आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा.